and this was the opportunity for us to learn from Dr. Bernard regarding different techniques in the cardiology and emerging techniques, especially the drug-eluting balloons, regarding the use of drug-eluting balloons, इंडिकेशंस कि कहाँ यूज़ करना है, क्या इंडिकेशन है, क्या रिजल्ट्स रहते हैं। सर का बहुत बड़ा इसमें रिसर्च है और अभी चल भी रही है, कुछ पब्लिश डाटा है। वर्ल्ड में जितने लोग हैं जो उनको यूज़ कर रहे हैं उनमें से काफ़ी बड़ा सर का नाम है डॉक्टर बर्नार्ड का। तो सर 2 दिन के लिए यहाँ थे, पिछले कल पीजीआई में कुछ केस किए थे, आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ केस कर रहे हैं एंड हमारे लिए एक अच्छी लर्निंग एक्सरसाइज है। डॉक्टर साहब बेसिकली कहाँ से हैं? सर इटली से। ये मिलान जो है ना वहाँ का डायरेक्टर ऑफ द कार्डियोलॉजी एट वन ऑफ द हॉस्पिटल देयर मिलान। Barnados, can you share the what is the cause of main cardiolosis access? The cause of the Yeah, disease? yeah. How many causes and why? The cases. Well, actually, Share your experience, you please. know, yeah, cardiovascular disease is increasing a lot in India and also in all of the regions of Asia. It is already the first cause of death in the Western world, we know this. So we have to face, there is a lot of economical efforts everywhere in order to find new devices, new technologies to face it. And so today I was invited here and in the best centers of India in the upcoming week to share our knowledge about a device which actually is produced here in India, because the company is an Indian company, Conference. We had a chance of gathering a lot of experience with this device in the last few years. We did clinical studies. We are currently doing randomized clinical trials, but the main goal is this. Currently, coronary artery disease is treated either by bypass surgery or by stents. This is the third way. In a similar way as we implant stent, we can use a drug-coated balloon. This is the name of the technology. Drug-coated balloon is able to maintain the vessel open without putting metal. What we have seen in the last 3 years is that if we implant stents, these stents are going to close within the years. A few percentage every year, 2 to 3% every year go to close, but after 10 years, this becomes 30, 40%. Okay? With this technology, we don't implant any prosthesis inside of the coronary arteries. We just deliver the drug, and that's it. It's an anti-restenotic drug, and after 1 year, 1.5 years, we have no more events in these patients. What are the main cause and how many to age for the bypassy? Well, bypasses were used quite so much until the first years of this millennium, and then there was an inversion between the number of PCIs and the number of bypasses. So now bypasses, at least in Europe, are using 10% of coronary artery disease. I don't know in India if you have similar rates. Similar to Europe. So bypass is reserved only for very diffuse and very complex coronary artery disease, because the technologies are helping us as interventional cardiologists to face almost all types of coronary artery diseases. Yeah. So, sir, you visited other countries also for the same purpose? Yes, last year I have been visiting Bangladesh. I did the first drug-coated balloon angioplasty in the history of the country. Then I've been visiting Thailand, Malaysia, Singapore. I will go to Japan this year later, and also the US. Now we are launching the drug-coated balloons also in the US. We are doing some clinical trials in order to have the FDA approval for the first drug-coated balloon. So, do you think that what's the health system is going in India, and how it can be improved? Like you visited other countries also. So, what's the difference in India and other? Well, I have a bias because I've been visiting only centers of excellence like this one and like the one of yesterday. So I think that there the standard of quality is very similar to Europe in terms of devices used and in terms of quality and care provided to the patients. I don't know, I cannot tell you if it's spread, this quality for all over the country or only related to these hospitals that I've been visiting. Doctor,
How do you prevent the without stent that heart technology? Yeah, this is a good question Yeah. because the stent render the immediate result beautiful. You can see a tube. You have created a tube with the stent. When you use a drug-coated balloon, you have to accommodate your eyes to a less perfect result immediately, but on the long term, it's a good investment for your patient. And what's the age going on the preventing that stents? What's the How to prevent without any stents? Yeah. To the, The key point is to, well, this is a sort of technical point. The key point is Yeah. to prepare the lesion correctly. Now, in the last few years, we had a lot of devices coming out for facing the calcifications, for example. We have a lot of calcifications in our coronary arteries. Now we have a lot of devices that are ablating the calcium, and then in the end, we can decide if we use a drug-coated balloon or a stent. But in my personal casuistry, I use a drop-coated balloon in 70% of the cases. and can you give the prevent to advice to everybody? Advice for the preventing. For the prevention, yes. Prevention. Patients should be mostly in India very kind to their glycemic control, to their lipid control, because you have a quite aggressive atherosclerotic disease more than in Europe, because the average age of our patients is around 75, Yeah. and here is 55, 60 come on, it's 20 years, 15 years of difference. So, This is the main cause of so this. the prevention is very important. So you should never smoke. Okay, where is the smoke? You should never smoke. First of all, then take care about diabetes of your lipids and do sports, That's good. aerobic sports. He is a sportsman. That's that's it. सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि अभी जब भी कॉर्निया आर्टरीज की ब्लॉकेज हार्ट की बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, तो हमारे पास अभी तक जो एस्टेब्लिश टेक्निक्स हैं, बाईपास सर्जरी है, अभी खोलने की जरूरत है, स्टेंट है। अब एक नई चीज़ जो है डॉक्टर बर्नार्ड जैसे बता रहे हैं, ड्रग कोटेड बलून इन सिलेक्टेड केसेस में, नॉट हर ऐसा नहीं कि हर किसी में, कुछ एक सिलेक्टेड केसेस हैं जिनमें आपको इसकी यूटिलिटी है, जहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है बिना स्टेंट्स के भी। और स्टेंट का मतलब वहाँ पे ड्रग, ठीक है, जहाँ पे कई छोटी नसें हैं जहाँ पे हम स्टेंट नहीं डाल पाते ब्लॉकेज की वजह से, वहाँ पे इसका यूज़ है। स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, उसके अंदर हम इंस्टेंट स्टेनोसिस कहते हैं, ब्लॉकेज हो जाए, उसमें इसका यूज़ करते हैं ताकि वो ब्लॉकेज का रिप्लेस का चांसेस दोबारा होने का कम किया जाए। ये जो स्टेंट हैं, जैसे आपने बताया कि आजकल तो ये नई न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं हम इसको, कि जो विदाउट स्टेंट भी इसका प्रिवेंशन है, लेकिन इसका कितना परसेंट ये इंडिया में सक्सेस हुआ? जैसे अभी इंडिया में ये जो टेक्निक्स हैं, अभी जैसे कंपनी है जिसका यूज़ कर रहे हैं, सर भी यूज़ करें डॉक्टर बर्नार्ड, इट्स इंडियन कंपनी जी, एंड प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, और कंट्रीज में भी जा रहा है, तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी इतना वाइड स्प्रेड यूज़ इसका नहीं है। और इंडिकेशन भी हम बड़ी कुछ एक हैं कि हाँ स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज हो गया, छोटी नसें हैं जहाँ पे करना है, बट धीरे धीरे दिस इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सो यूज़ इसका बढ़ता जाएगा। क्या इसमें इंडियन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मेडिकल मशीनरीज की कमी है, या कुछ और आप समझते हैं कि या डॉक्टर के एजुकेशन की आज की कमी? डेट में वर्ल्ड में ऑलमोस्ट कोई भी कंट्री डिफरेंट नहीं है, ना टेक्नोलॉजी के बारे में और ना ही मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में। कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ कहीं पे भी है, आज जैसे हमारा कोई मटेरियल है जो आपको किसी भी और बाहर की कंट्री में मिलेगा, वही यहाँ मिलेगा हर चीज़ जी। और इंडियन टेक्नोलॉजी जैसे ये कंपनी है जो बलून है जो यूज़ कर रहे हैं, ये इंडियन कंपनी है जिन्होंने डेवलप किया है। जी, आप कुछ और? ओके सर।